Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर दबा और चैनल को सब्सक्राइब कर दबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर दबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन एथिरे स्टैंडर्ड डेविएशन विषय रे पढ़िबा which is usually denoted by the symbol or the letter sigma. Okay, so it is a Greek alphabet which was first suggested by Carl Pearson as a measure of dispersion in the year 1893, and it is defined as the positive square root of the arithmetic mean of the squares of the deviations of the given observations from their arithmetic mean. Okay, तो मन कर जदि आम पाखे n संख्यक ऑब्जर्वेशंस अच्छी लाइक x1 x2 up to xn which is having a data, then you have the standard deviation given by sigma which is equal to square root of 1 by n summation x minus x bar square. Okay, it is x bar kono, it is nothing but the arithmetic mean. Okay, so एटा हला जो वेरियस स्टेप्स गुड़ा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन राइट. अच्छा, जदि मन कर आम पाखे फ्रिक्वेंसी अच्छी जदि गोटे डाटा फ्रिक्वेंसी रे देछि ताले एठी कोन हबो स्टैंडर्ड डेविएशन रो वैल्यू एबे स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय कैपिटल n एठी कैपिटल n कोन समेशन f व्हिच इज द टोटल फ्रिक्वेंसी, देन वी हैव समेशन f x minus x bar होल स्क्वायर. ओके, आउ again x bar is nothing but the arithmetic mean in terms of frequency व्यवहार करिबो. ओके, या पई भी स्टेप्स अछि in order to calculate the standard deviation. ओके, अच्छा तापरे एठी बहुत गुडा रिमार्क भी देछि लाइक नंबर 1 रे कहूछि it may be pointed out that although mean deviation could be calculated about any one of the averages like m md mo, okay, माने mean median mode, our standard deviation is always computed about the arithmetic mean. Okay, mean deviation पाई तमे median भी नहीं पारो, mode भी नहीं पारो, mean भी नहीं पारो, किंतु standard deviation पाई निहाती भावरे arithmetic mean टा दरकार. Okay, besides that there are different remarks which you can read by yourself because it a topic टा बहुत लंबा topic टा. I am going straight to an example. देखो मने करो आम पाखरे डाटा अच्छी x value which is 66666 पांचटा 6 ताले हमें एठी मीन पाइबा अगेन 6 स्टैंडर्ड डेविएशन किंतु एठी कोन हबो देखो एई हिसाब रे फार्मूला रे कैलकुलेट करले इट विल बी 0. ओके, सो एठी स्टैंडर्ड डेविएशन माने किछि भी चेंज होउनी डेविएट होउनी. ओके, सब वैल्यू एठी समान अछि आइडेंटिकल अछि. सो इन अदर वर्ड्स सिग्मा 0 even only if all the observations are equal, right. तापरे मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज अच्छी स्टैंडर्ड डेविएशन रो लाइक इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ द स्केल. ओके, सो यार प्रूफ भी एठी हमें आपको देखिबा को पाइबा जदी मन करो d इक्वल टू x माइनस a देन सिग्मा x इक्वल टू सिग्मा d. ओके, सो हमें जदी एठी x को d हिसाब रे लिखले भी स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो नाही, किंतु जदि हमें d इक्वल टू x माइनस a बाय h कर देला, ओके, स्केल चेंज हले किछि तो हलानी किंतु ओरिजिन चेंज कर देला ताले सिग्मा x इक्वल टू h इनटू सिग्मा d. देन नंबर 2 रे स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. ओके, सो मोर प्रिसाइजली तमे यार स्क्वायर जदि लिखिबो ताले सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू दिस मच हबो. ओके, सो याको हमें मीन स्क्वायर डेविएशन व्यवहार करि परिबा ए हिसाब रे राइट. एठी कोन करछु xi माइनस a लिखिदेला. ओके, ए होची गुटे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोटा कि तमे गुटे आर्बिट्रेरी मिड वैल्यू टे नै थाओ. ओके, सो एठी s स्क्वायर कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर हबो.
ओके एंड द साइन ऑफ इक्वालिटी केतेबेले आसीबो जेतेबेले a इक्वल टू x बार होची ओके यार भी प्रूफ आपको अच्छी नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन इक्वल टू range and it is less than equal to that is your x maximum minus x minimum okay which is nothing but the range then standard deviation is suitable for further mathematical investigation standard deviation of n natural numbers जदि 1 to n नहीं जाउछो ताले याकू कैलकुलेट करिवो यार प्रूफ भी अछि याकू it will be square root of n square minus 1 by 12 okay so empirical rule जदि देखिबा for a symmetrical bell shaped distribution we have approximately the following area properties कोन area number 1 देखो 68% coverage आसी होची observations which are lying in the range mean plus or minus 1 into sigma 95% आसी जाउची mean plus or minus 2 sigma और 99% आसी जाउची mean plus or minus 3 sigma रे ओके यार भी डिटेल अछि आपको ओके तापरे approximation जदि आमे नउचू गोटे रिलेशनशिप पाइबा पई क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन भितरे ताले वी कैन राइट क्वार्टाइल डेविएशन नियरली इक्वल टू 2 by 3 times of standard deviation mean deviation nearly equal to 4 by 5 sigma then we have the ratio qd is to mt is to st which is 10 is to 12 is to 15 right and finally for any discrete distribution standard deviation is not less than mean deviation about the mean okay that means the standard deviation will be greater than or equal to the mean deviation about the mean okay there are different merits and demerits of standard deviation okay this you can read by yourself okay एठी देखो विभिन्न प्रकार हुए यार मेरिट्स डिमेरिट्स बुझेला तापरे गुटे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आछि वेरिएंस ओके अपकमिंग टॉपिक रे हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी देखिबा सो वेरिएंस कोन आ गुटे होची मीन स्क्वायर डेविएशन कोन ओके वेरिएंस अकॉर्डिंग टू विलियम ग्रीनवोल्ड it is the mean of the square deviation about the mean of a series thus variance is the square of the standard deviation and is denoted by nothing but your sigma square ओके माने से स्क्वायर रूट को आर पट को नहीं गले हमें पाई जबा कोन ना वेरिएंस राइट आ गुटे रहला कोन मीन स्क्वायर डेविएशन व्हिच इज यूजुअली डिनोटेड बाय s स्क्वायर ताले एठी कोन होला दिस इज इक्वल टू 1 by n टाइम्स ऑफ समेशन f x minus a रो स्क्वायर एठी कोन होई छि a गुटे जो आछि कांस्टेंट आर्बिट्ररी एटा रिप्लेस कर दोछि x बार को ओके व्हिच इज द mean square deviation so the square root of this mean square deviation या कोइबा हमें root mean square deviation that is s okay एठी हमें देखो स्क्वायर रूट पके देला ओके आ जदि रिलेशन बाहर करछो सिग्मा स्क्वायर और s स्क्वायर भितरे ताले फाइनली आसीबो देखो एठी तमर रिलेशन ही जबो this much x sorry s square is equal to sigma square plus x bar minus a रो square okay जदि एठी x bar minus a square being the square of a real quantity then it will always be non-negative okay ताले ए केस रे हमें कोन कहबा s square equal to sigma square plus a non-negative quantity that means s square must be greater than equal to sigma square okay आउ एठी जो इक्वालिटी साइन ता केते बेले आसीबो जते बेले s square equal to sigma square हबो केते बेले ना जते बेले एठी x bar equal to a हे जबो राइट अच्छा मूविंग फॉरवर्ड नाउ देखो डिफरेंट रिमार्क्स अछि प्रॉपर्टीज मध्ये अछि तमे एटा पढी परिबो आराम से डिफरेंट फार्मूला जदि हमें देखिबा फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस रोची लाइक एटा होची हमर सिग्मा स्क्वायर को मोर प्रिसाइजली हमें सिग्मा x स्क्वायर बोल लिखि परिबा ए हिसाब रे ओके ताले फार्मूला गुटे आछी कोन सिग्मा x स्क्वायर रो फार्मूला हला जोटा एति की याको हमें वन टर्म माइनस अनदर टर्म ए हिसाब रे लिखि परिबा यार प्रूफ मध्ये एठी देछि राइट देखो एटा आसला यार प्रूफ ता तापर सेकंड फार्मूला ले जदि तमे गुटे एबे स्केल चेंज करछो d equal to x minus a where a is arbitrary constant then ए हिसाब रे सिग्मा x स्क्वायर समान ही जीवो सिग्मा d स्क्वायर सहित which is again this much एठी ऊपर फार्मूला रे केवल जो x जगह रे हमें d को एठी रिप्लेस कर दीछु राइट मूविंग फर्दर
यार प्रूफ भी एटा देख देछि। अच्छा वेरिएंस भी या हिसाब रे बाहरला राइट। अच्छा तापरे नेक्स्ट फॉर्मूला एठी फॉर्मूला नंबर 3 रे कहूछि if we change the origin and the scale in x ओके origin भी चेंज करबा और स्केल भी चेंज करबा माने d equal to x minus a by h जदि नहीं जिबा where h is a positive number then sigma x square must be equal to h square sigma d square जोटा हमें प्रीवियसली देखि भी थिला एबे यार प्रूफ भी एटा दउछि राइट। तापरे आपको बढ़िबा फर्दर वेरिएंस जदि हमें कैलकुलेट करूछु वेरिएंस ax equal to a square variance of x और standard deviation ax equal to a into standard deviation of x ओके देन आपको जदि बढ़िबा ताले देखो h फैक्टर रे जोटा तमरो स्केल सहित ओरिजिन चेंज होतला सिग्मा x equal to h into sigma d होची ओके डिफरेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस फ्रॉम द रॉ डाटा सपोज n संख्यक ऑब्जर्वेशन अछि ताले वेरिएंस रो वैल्यूटा एतिकी हे जिवो ओके ताले आकु जदि हमें देखुछु जे जदि x बार by arithmetic mean दे दीची और sigma x square दे दीची then we can obtain the value of summation x square okay अच्छा moving again further now let us come to the example or the problem part एठी बहुत गुडा प्रॉब्लम आसी पारे स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं कि फास्ट एठी कहूची कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एठी आम पाखरे 10टा ऑब्जर्वेशन दे दोची ओके आ एठी किछि भी फ्रीक्वेंसी देनी ताले एटा को हमें नहीं जबा कोन एक्स्ट्राटा एई जते सब डाटा रु हमें कोन करबा एको टोटल कर देबा समेशन x बाहरी जिवो ताले एई समेशन x रु हमें x बार पाई परिबा दिस मच हेबो ताले x माइनस x बार पाई गला देन x माइनस x बार रो स्क्वायर पुणी फर्दर या को फाइनली समेशन कर देबा सो दैट हमें वंस वेरिएशन पाई जिबा देन द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मेकिंग द स्क्वायर रूट ओके एते बड़ क्वांटिटी को स्क्वायर रूट करबा रो दुईटा उपाय अछि या तो तुम सीधा कैलकुलेट करि पारो कैलकुलेटर रे किबा एंटी लॉग नै के भी या को वैल्यू बाहर करि पारो 0.03256 आसीबो ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम एठी गोटे फ्रेज देउछि ओके एही टाइप रो ए फ्रेज देला कोन कहउछि ना कंप्लीट अ टेबल showing the frequencies with which the words of different numbers of letters occur in the extract reproduced below जोटा देछि punctuation mark भितरे treating as the variable of the numbers of letters in each word and obtain the mean and standard deviation okay so किछि नै जते कि संख्यक एठी वर्ड अछि ताले सेई वर्ड रो लेटर को हमें जदि गणिबा ताकू हमें x वैल्यू अगेन पाई गला आ जते संख्यक सेई बढिया वर्ड रिपीट होउची से ताकू हमें फ्रीक्वेंसी कहि देबा ताले देखो सपोज फॉर एग्जांपल द वर्ड हैविंग 4 letters is occurring 10 times तो यार फ्रीक्वेंसी 10 हला ताले एठी d को हमें नहीं परिबा एज ए स्केल फैक्टर देन fd then fd square and finally its summation standard deviation easily बाहरी गला ओके एठी किछि भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करर सिंपल फंडा हैला स्टैंडर्ड डेविएशन रो बेसिक फार्मूला मने रखो जदि x डाटा देछि ता सहित फ्रीक्वेंसी देछि जदि बिगर वैल्यू देछि ताहले तमे d स्केल चेंज करो d बाहर करो आ फार्मूला अप्लाई करो ओके मूविंग ऑन फर्दर नेक्स्ट प्रॉब्लम कैलकुलेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एठी देखो कंटीन्यूअस डाटा एटा नुहे ओके एटा कंटीन्यूअस डाटा नुहे किंतु जदि हमें एठी मीडियन कैलकुलेट करथांता ताले हमको याको कंटीन्यूअस करबा को पड़ी थांता हमें एठी मीडियन तो कैलकुलेट करनु हमको मीन दरकार ताले देखो जो क्लास देइछि हमको क्वेश्चन रे ताको हमें सीधा लिखि देबा तार मिड वैल्यूटा x दे देबा माने करो याको जदि हमें कंटीन्यूअस करथांता फर्स्ट क्लास रे कोन होई थांता एटा 90 रु 99 अछि माने एटा हेई थांता 89.5 टू 99.5 ताले मध्य मिड वैल्यू 94.5 ही आस्थांता ओके सो सबु केस रे मिड वैल्यू सेम ही रहइबो तारो फ्रीक्वेंसी हमको दे दोछि देन d वैल्यू fd स्क्वायर ताले इजी गला एबे मीन कैलकुलेशन एंड देयर बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ओके मूविंग फर्दर arithmetic mean and the standard deviation of a set of 9 items are 43 and 5 respectively. If an item of value 63 is added to the set,
find the mean and standard deviation of 10 items. Okay, आगरू थिला केते n equal to 9 x bar 43 sigma 5 ताले आमे एठी summation x एथुरु बाहर करि परिबा which is coming out to be 387. now sigma square आमे एठु बाहर करि परिबा जार वैल्यू आकु जदि पुट करूछु आकु टिके सॉल्व कर देला summation x square रो वैल्यू पाइ गेला 16866. now गोटे नुआ आइटम जोग हैला which is 63, so एटा होची 10th item number 10. so एबे नुआ summation x केते हबो एठी simply 63 ऐड हि जबो 387 सहित 450 गला. न्यू मीन केते हबो एठी 450 बाय 10 करिबा ताले 45 आउ नुआ summation x square केते हबो एई जो पुराना सहित 63 स्क्वायर को ऐड कर देबा ताले 20835 ताले स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली कैलकुलेट करि परिबो राइट. अच्छा, moving further, initially there were 9 workers all being paid a uniform wage. Later a 10th worker is added whose wage rate is this much and less than that of the others. okay, similarly जो ऊपर प्रॉब्लम रे जे भलिया आमे कैलकुलेट कला सेही हिसाब रे ही एठी प्रॉब्लम को कैलकुलेट करिवार अछि. किछि भी एठी रे टिके देखो खाली जे दुईटा जिनिस पचरछि the effect on the mean wage mean को हिसाब रे चेंज होउछि आउ standard deviation of wages of the group of the 10th workers. okay, so similarly as like the above problem you can calculate it right. moving further, then we have 20 passengers who were found ticketless in a bus. okay, so the sum of the squares and the standard deviation of the amount found in their pockets were 2000 okay and rupees 6 respectively. okay, now if the total fine imposed on these passengers is equal to the total amount recovered from them and fine imposed is uniform, what is the amount each one of them has to pay as a fine. okay, तापर कहूची पुनी what difficulties do you visualize if such a system of penalty were imposed. ठीक अछि हम पाखरे 20 पैसेंजर अछि सो एटा होची तमरो ऑब्जर्वेशन व्हिच इज एक्स डाटा. ओके, नाउ जो 20 पैसेंजर अछि निया गला से मानन को पाखरे किछि भी टिकट नथिला. दे वर फाउंड इन द पॉकेट ऑफ सपोज ith passenger. okay, so the amount is found in the pocket of suppose ith passenger. now we are having n equal to 20, then summation I equal to 1 to 20 of xi square is given here as the problem which is 2000. okay, because it is sum of the square कही दीची our standard deviation दे दीची sigma equal to 6. ठीक अछि. now the total fine imposed on the ticketless passengers is given to be equal to total amount recovered from them right. now the total fine imposed on 20 passengers eta kon hobo eta kichi nai summation I equal to 1 to 20 of xi. now further, since the fine imposed is uniform among all the 20 passengers, so fine to be paid by each passenger hijibo kete simply 1 by 20 of this much. okay, so it is your x bar right. then we have sigma square already given in the problem यार फॉर्मूला लिखिला. ओके, एटी इची तो फ्रीक्वेंसी देइनी राइट. ताले एई थ्रू हमें फाइनली पाउछु केते सिग्मा सॉरी x बार रो स्क्वायर यार वैल्यूटा एतिकी आसीबो ए सब वैल्यू पुट करिबा. सो फाइनली 64 आसिला. सो x बार आसीगला 8 रुपीस 8. hence using this equation the fine paid by each passenger is rupees 8. now ebe problem kono if among these ticketless passengers there are few rich persons with large sum of money in their pocket, then an obvious shortcoming of this system is imposing penalty is that it will give undue heavy penalty to the poor passenger. okay, so rich ho kimba poor ho saman penalty jehetu lagi jauchi. okay, so poor passenger pakare smaller amount of money thibo आ तांकोठु भी समान पैसा जदि कलेक्ट करा गला एटा गोटे प्रॉब्लम आसिला. ओके, moving on to the next problem. देखो एठी नेक्स्ट प्रॉब्लम रे कहूची
आमको मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन बाहर करो ऑब्जर्वेशन दे देला एठी 1 2 4 6 8 9 ओके ता सहित एठी कहूची ट्रांसफॉर्म दीज observations such that the mean of the transformed observations become double of the mean of x but the standard deviation remain unchanged ठीक अछि so हमें एठी n हेगला 6 x bar यदि कैलकुलेट करिबा it will be equal to 5 हमें x रू x स्क्वायर बाहर कर देबा so that हबे sigma x स्क्वायर हमें पाई गला which is 8.67 sigma x 2.944 हमें कोन करिबा let us take d equal to x plus x bar so এটা হেগলা respectively d value and summation over d okay so we are changing the origin which will not impact upon the standard deviation okay so it d bar हेगला 2x bar so that sigma d as I said remains unchanged which is equal to sigma x independent of the change of origin okay তাহলে ଆମେ এଠି origin only change करिबा okay so एठी x रू point a को नै गला ताले d equal to x minus a d bar equal to x bar minus a sigma d equal to sigma x okay ताले we shall choose a so that d bar equal to 2x bar और x bar minus a equal to 2x bar और a equal to x bar ताले d equal to केते हला x plus x bar जोड़ा में थर्ड कॉलम रे लिखि थिला टेबल रे okay so the transform values of these new variables which are satisfying equation star this one is given by the last column as I said of the above table right and note that d bar will be equal to summation d by n which is 2x bar and it can be easily verified that sigma d square will be equal to sigma x square and hence sigma d equal to sigma x moving on next problem एठी variance कोची गोटे series रो number 2 3 11 and x is unknown so this variance is this much 12 1 by 4 so find the value of x obviously ताले एठी ऑब्जर्वेशन संख्या n केते 4 sigma x square आमे एठी लिखि परिबा h summation x square by n because एठी किछि भी फ्रीक्वेंसी देनी x तापरे x square ए सब लिखि देला summation x square लिखि देला राइट ताले sigma x square को आमे जतकी हेबो जतकी दूर पर्यंत आमे याकू भांगी देला राइट देन this much याकू टिके आमे सिंपलीफाई कर देला okay now this value of sigma x square is already given 12 1 by 4 which is nothing but 4 into 12 that is 48 plus 1 that is 49 by 4 right ताले एठी याकू केवल सॉल्व करिवार अछि एटा गुटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसी गला जा जोतिरे की x वैल्यू दुईटा आसी पारे प्लस और माइनस ए की सो देखो यार वैल्यू accordingly 32 plus 4 by 6 हबो किंबा 32 minus 4 by 6 that is 4 और 14 by 3 रे एटा सॉल्व हे जाउछे ओके मूविंग ऑन the mean of 5 observations is 4.4 our variance is 8.24 if 3 of the 5 observations are 1 2 6 find the value of the other 2 एटा भी ऊपर जो हिसाब रे प्रॉब्लम टा कला से हिसाब रे को सॉल्व करिवार अछि आई होप यू कैन डू इट okay एठी भी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आछि right now next problem for a group of 10 items एठी एटा टिके बे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आर को हमें गति करछु summation I equal to 1 to 10 xi minus 2 equal to 40 similarly summation I equal to 1 to 10 xi square equal to 495 then find the variance of this group okay so it is जेहेतु 10 items को 10 items but 10 values of x1 x2 up to x10 of the variable it is जो summation second दा दे देला which is second problem second bit रे 110 ଆଉ xi minus 5 रो whole square 1000 okay so find the variance of x कहला ठीक अछि जेते हमरो ग्रुप रे 10 टा आइटम अछि 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सो स्मॉल n हेगला एठी 10 किछि भी फ्रीक्वेंसी देनी summation x square हला 495 this one now summation x minus 2 is equal to 40 this one right ताले x minus 2n याकू जदि हमें लिखिबा because summation 2 केते तक करबो हमें
टोटल n टाइम्स करवा सो x माइनस 2n इक्वल टू 40 राइट समेसन रे समेसन x रो वैल्यू आम पाऊँ फाइनाली 60 राइट ताले सिग्मा x स्क्वायर हो केते समेसन x स्क्वायर बाय n व्हिच इज समेसन x बाय n रो माइनस करके एठी स्क्वायर टा कर देला हमें इन ऑर्डर टू फाइंड द variance right so the required value after putting will be equal to 13.5 similarly second टाको भी तमे आराम से हिसाब रे solve करि परिबो right now moving further for two observation A and B show that the standard deviation is half the distance between them right एटी किछि भी न्यूमेरिकल डाटा देइनी दुईटा ऑब्जर्वेशन को लिखि देला तापरे एरो स्क्वायर को लिखिला so that एटी वेरिएंस इगला सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू दिस मच या को लिखिकी एबे सिंपली सॉल्व करिवार अछि सो स्टैंडर्ड डेविएशन एबे स्क्वायर रूट आसी जिवो दिस मच सो एबे देखो 1/2 बाहर को आसिला आउ मझी रे एटा एब्सोल्यूट वैल्यू नि गला बिकॉज़ स्टैंडर्ड डेविएशन टा निहाती भाबरे पॉजिटिव रहे किबा इक्वल टू 0 होय एटा केबे भी नेगेटिव होय नाही मन रखितबो सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू half times of mod of a minus b. A minus b माने कोन this is nothing but the distance between a and b and hence proved right तापरे moving further next problem for the numbers 5 6 7 8 10 12 if s1 s2 are the respective rms deviation about the mean and about the arbitrary number 9 then show that 17s2 square equal to 20s1 square ठीक अच्छे so we have n is equal to 6 because छोटा observation इधर पाइगला हमें x bar equal to 8 s1 square जोटा कोची mean square deviation about mean so यार को value बाहर को ले 17/3 आसीबो s2 square mean square deviation about the point 9 so 9 को माइनस करी के हमें होल स्क्वायर करी के समेशन करबा 20/3 सो एबको एबे रेशियो जदी बाहर कर दबा जोटा कि क्वेश्चन पचारछि ताले s1 square by s2 square हिजबो 17/20 hence the result is found out okay moving further a charitable organization decided to give old age pensions to the people over 60 years of age the scale of pensions were fixed as below age group को दे देला एठी और रेट दे देला पर मंथ केते पाइबे okay the ages of 25% who secured the pension right are given below okay जो 25 जन पेंशन पाइबे calculate the monthly average pensions payable per person and the standard deviation okay so जो हमको क्लास देछि obviously एटा गोटे कंटीन्यूअस क्लास नाउ याको हमें गोटे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रे पकेबा बिकॉज हम पाखरे एठी 25% छथि ओके सो एज ग्रुप हमें लिखि देला ओके एज ग्रुप भितरे ए जेते सब 25% रो केते एज ग्रुप रे केते थरो ऑकरेंस आछि ताकू लिखि देला व्हिच इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी तापरे मंथली पेंशन जोटा से माने पाइबे रेस्पेक्टिव डाटा कहूची ताकू लिखि देला सपोज हमें एठी 300 को नै गला एज द वैल्यू a ताले d पाइ गला दिस मच देन fd स्क्वायर देन द देयर समेशन ओके ताले इजीली एबे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पाई परिबा by applying the formula which is found out to be rupees 67.66 right moving on to the next problem so ethi kohuchi you are the in charge of the rationing department of a state which is affected by food shortage okay so information jota ki local investigation ro jana porchi area mean calorie standard deviation of calories okay estimate requirement gote adult pai hochi 3000 calorie au absolute minimum rochi 1250 सो याकू नहीं कि कमेंट करो रिपोर्ट रे फिगर को आनो आउ डिटरमाइन करो जे को एरिया रे अर्जेंट एक्शन दरकार ओके आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ इट इज वेरी इजी ओके मूविंग ऑन सिमिलरली देखो एते सब जो प्रॉब्लम करला पर आई कैन से यू कैन डू द फर्दर प्रॉब्लम्स बाय योरसेल्फ देखो ए प्रॉब्लम रे भी गोटे क्लास इंटरवल दे दीची तार फ्रीक्वेंसी दे देला ओके बाहर करियो कोची मीन आउ स्टैंडर्ड डेविएशन ओके इजीली बाहर करि परिबो तापरे मूविंग फर्दर एठी भी सेम जिंस डी आउ एफ दे देला ओके आउ अगेन स्टैंडर्ड और मीन डेविएशन बाहर करबा को कहूची ओके तापरे
Moving further, एठी देखो एटा गोटे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. एज दउची of 20 husband and wives. Okay, so husband and wife 20 numbers are there, tankara age dedela. Form a two-way frequency table. Okay, two-way frequency table showing the relationship between the age of husbands and wives with class interval भी कहूची एठी 20 to 25, 25 to 30 etc. माने 5 रोथबो जेमती एठी क्लास इंटरवल रेंज टा. ओके, सो एटा होची तमर जो टेबल टा ए टेबल को नेकी हमें गोटे टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल तैयारी करिबा. ओके, जाको कि हमें बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मध्य कहि परिबा, जोथि कि हमें अप रे नै गला एज ऑफ हस्बैंड एटा आउ डाउन रे नै गला एज ऑफ वाइफ्स रेस्पेक्टिवली. फ्रीक्वेंसी को हमें एठी बार रे इंडिकेट करला. ओके, टोटल फ्रीक्वेंसी को हमें पाइबा ए जगह रे, राइट. एठी हमें टोटल फ्रीक्वेंसी पाउछु, सो दैट एन हेगला केते इक्वल टू 20. एठी भी टोटल एफ वाई, एठी भी एन हेगला 20. काई की बिकॉज वी हैव 20 हस्बैंड्स एंड 20 वाइफ्स ऑब्वियसली. ओके, सो एठी एफ वाई स्टैंड्स फॉर योर एज ऑफ योर wives. Okay, how fx stands for age of your husband. Okay, एटा होची गोटे fx, एटा आ गोटे fx, आ गोटे fx. Similarly एटा हला गोटे fy, आ गोटे fy एमती चलीची, राइट. ताले एई टेबल रु एबे हमें इजीली पाई परिबा हमर मिड वैल्यू रु पुनी d, then ft, then ft square, and thereby the mean and the standard deviation easily calculate हे परिबो. I hope. अच्छा, एठी देखो जो जो आम उपरे पढ़ी तार प्रूफ एठी आम देखा पाऊँ. जदि एन संख्यक डाटा अच्छी x1 x2 up to xn, ओके, of a variable x and x bar होची यार arithmetic mean, then can we obtain a measure of dispersion x by taking the arithmetic mean of the deviation xi minus x bar. Okay, if not, suggest how can we use these deviation to obtain the measure of dispersion. Okay, এটা ଗୋଟେ interesting question टे. So x bar एथिरो हमें बाहर कला ए डाटा रु. ताले एबे जो हिसाब रे क्वेश्चन कहूची x minus x bar. ओके, so 1 by n x minus x bar याकू लिखिबा जदी हमें इक्वल टू 1 by n times of I equal to 1 to n xi minus x bar which is 0. Okay, so because the algebraic sum of the deviation of a given set of observation form their mean is 0. Okay, गोटे जगह रे एठी mean टू जदी हमें deviation काढुछु ताले 0 आसी जिवो सम कर देले. However, if we take the absolute value of the deviation, that is xi minus x bar, we can obtain a measure of dispersion called as the mean deviation about the mean. Okay, so এটা হচ্ছে mean deviation about the mean র ফর্মুলাটা. ওকে, তাহলে এটি আমি mod নিয়ে যাচ্ছু. দেখো ডিফরেনশিয়েট যদি করিব এটি মডটা নিয়ে যাইছি. ওকে, সো দ্যাট নেগেটিভ কোয়ান্টিটি को हमें काटी दउछु टोटली, राइट. सो we are ignoring the negative sign. Another measure of dispersion which is called as the standard deviation is obtained on taking the square root of the arithmetic mean of the square of the deviation xi minus xi bar. Okay, this much. तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम रे जो प्रूफ गुड़ा हमको ऊपरे आमे देखी थिला से प्रूफ आड़ को जीवा. Comment on the following. Standard deviation of a distribution is invariant under change of origin. Already देखीछु सारो एठी प्रूफ करूची. If the mean and the standard deviation n observation be x bar and sigma, then the mean and standard deviation of एठी सब जाकर सामने रे जदी माइनस पुट कर देले ताले माइनस x bar हबो माइनस सिग्मा हबो. ओके, यारो भी एठी प्रूफ देइची. You can do it by yourself, right. तापरे एठी नेक्स्ट रे find the mean and the standard deviation of n natural numbers. याको एठी देखो प्रूफ करूची. Hence deduce the mean and the standard deviation of numbers 1 to 10. Okay, once तमे n observation पाई गले n जगह रे 10 पुट कर देकी यार वैल्यूटा पाई पारिबो. ओके, सो आई होप ये बड़ा जो प्रॉब्लम अछि देखो एटा कोटा जो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन सहित तार रिलेशन केमते आछि ताकू नै कि रिलेशनशिप. ओके, so that the standard deviation is not less than the mean deviation from the mean. या को भी एठी प्रूफ देछि, राइट.
सो यही भाया बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखा ये तुम पाच। सो आई होप यार जो एंड पार्ट रे जो गुड़ा प्रॉब्लम मु स्किप करदेली यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ आ कौ जगह तुमको जब किसी जिनस डाउट लगे प्रिंटिंग मिस्टेक देखागला यू कैन इनफॉर्म मी बाय योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन। ओके, Thank you.